Good evening, good evening, guys. After a long break, and now we are going to complete accounting standard based on liabilities. There are only two accounting standard, AS29 and AS15, and Institute has given me a sufficient time to complete it. So before starting any session, first recall all your accounting standard names. फटाफट फटाफट आ जाइए, join हो जाइए. Yes, and good evening to all of you. बहुत दिनों के बाद sir, yes sir, बहुत दिनों के बाद. And we are going to start with our basics. That first we are going to recall all accounting standard names. I hope you remember each and every name, and no one is now don't know the names of these accounting standards. So start with this accounting standard. Number one is a disclosure of accounting policy. Number two is inventory valuation. Number three, cash flow statement. Number four, contingencies and events occurring after balance sheet date. Number five is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. Six number beta removed. Seven number construction contract. Eight number removed. Nine number revenue recognition. 10 number property, plant and equipment. 11 number effects of changes in foreign exchange rate. 12 number government grant. 13 number accounting for investment. 14 number is accounting for amalgamation. 15 is employee benefits. 16 is borrowing cost. 17 segment reporting. 18 related party disclosures. 19 is leases and 20 is earning per share. 21 consolidated financial statement. 22 accounting for taxes on income. 23 is investment associates in case of consolidated financial statement. 24 is discontinuing operation. 25 is interim financial reporting. 26 intangible asset. 27 is investment in joint venture, and 28 is impairment of assets. 29 is provision, contingent liabilities and contingent assets. I hope you recall each and every name. चलो जल्दी से say good evening in the comment section. फटाफट फटाफट. सबसे पहला गुड इवनिंग किसने किया? पार्थ राणा जी, वेलकम बैक सर. थैंक यू बेटा. मोहम्मद जी, किरण जी, बसवराज जी, गुड इवनिंग बेटा. माधव तिवारी, यस गुड इवनिंग. दिव्या कुमारी, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. अरे वाह, लिस्ट तो बहुत बड़ी है आज आपकी. एक रिक्वेस्ट है सर, पहले इलस्ट्रेशंस को. ओके, दीपश्री जी, दीपश्रय जी, सॉरी. यस गुड इवनिंग, कैसे हो सर? नाइस लुक, थैंक यू बेटा. आफ्टर वॉचिंग अ लॉन्ग टाइम. Yes, beta. Thank you, thank you, thank you, all of you. I cannot read comments of each and every student. But I also was missing you all. And finally, we are meeting today for this 4 sessions. तो 4 sessions में हूँ आपके साथ. Don't worry, liability based standards हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. और रिक्वेस्ट क्या है सर? एक्सप्लेन करो थ्योरी. चलो जैसे आपकी इच्छा, पहले थ्योरी एक्सप्लेन करो. ओके, नो प्रॉब्लम. सो आज पहले थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस. यस, टुडेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई विल टेल यू फर्स्ट why this accounting standard is important. S29 और यस, चलो स्टार्ट करते हैं. सो थ्योरी एंड देन वी आर गोइंग टू सी सम इलस्ट्रेशंस. Illustrations file I already uploaded on the our BOS app, so you can download illustration questions because illustration questions are not there in the study material. So some questions I have added for this accounting standard. Why? Because accounting standard 29 is difficult, not for understanding, but how to write the answer is very difficult for S29. So friends, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस जो है वो सब मिल जाएंगे. किधर मिल जाएंगे? बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप पे जो क्वेश्चंस है मैंने अपलोड कर दिए हैं. 16 to 17 क्वेश्चंस आई ऑलरेडी अपलोडेड. रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल अपलोड ऑन नेक्स्ट सेशन. सो बेटा, आज का सेशन जो है व्हाई दिस स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, एक बार हिंदी में समझ लीजिए. ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 समझ में तो बहुत आएगा सर, समझ में बहुत अच्छे से आएगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट लिखना कैसे है, लिखना कैसे है ये एग्जाम में समझ में नहीं आता है. सो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से करवा दूंगा. डोंट वरी, जितना भी है सिर्फ लेक्चर को सुन लो और आ जाओ बोर्ड ऑफ स्टडीज के हमारे ऐप पे. चलिए सो शुरू करते हैं बेटा. थैंक यू फॉर गुरु मंत्र सीरीज. यस बेटा, गुरु मंत्र सीरीज हिट कर देना आप लोग और अच्छे से देखना डेली डेली डेली. ओके, चलिए सर, प्लीज कवर मॉड्यूल 3 एज वेल. दीपक कुमार, बेटा जितना भी आईसीआई सिलेबस अलॉट करता है अकॉर्डिंगली आई हैव टू टेक दैट सिलेबस ओनली. एंड प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन गिव फीडबैक्स टू अवर वेबसाइट पे. ओके, टू अवर बोर्ड ऑफ स्टडीज फैकल्टीज. चलिए सो यस, शुरू करते हैं आज का सेशन. व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29? S29 is nothing but it's a provision contingent. अरे रे 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 रे, स्टार्टिंग से लेना था सर. हाँ जी, आ जाइए. सो S29 provisions, you can see here provisions, contingent liabilities and contingent assets. So provision क्या होता है? Provision is nothing but
you are going to record it entry. So sir, इसमें entry होता है, and entry है. If there is an entry, there is accounting standard. If you pass entry, it means this is the accounting standard. What is contingent liability and contingent assets? You will disclose it. So contingent asset you will disclose in the board of directors report only, not in notes to accounts. But contingent liabilities you are going to disclose it in your notes to accounts. So this is disclosure part. Okay. So contingent liability के लिए it will be disclosure part, but for provisions it will be accounting standard, sir. So before starting any standard, what you ask to yourself, whether this is accounting standard or whether this is disclosure standard. Disclosure based standards we already covered. Actually, accounting standard 20 tha. Okay. So disclosure standards we already covered. Is 5 tha. Net profit or loss for the pair private items, changes in accounting policies, the disclosure standard. So beta, disclosure standard is only we write it in the notes to account, but accounting standard we pass journal entry, and journal entry pass kiya to that will be accounting standard, which will cover under RMPD analysis. What is RMPD analysis? Recall, recognition, measurement, then presentation and disclosure. So accounting standard is RMPD analysis, and disclosure standard are only disclosures in the notes to accounts. और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए सर? हाँ जी, ओके, चलिए सर. हाउ टू कम्युनिकेट ऑन फोन? बेटा नॉट अलाउड बेटा. ओके. और वेलकम जी मानसी गुप्ता जी के लिए. यस बेटा, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी मानसी. हाँ जी बेटा, तो उन्होंने 10-12 बार तो मैसेज लिख दिया है, आपने मेरा नाम नहीं पढ़ा करके. यस मानसी. ओके. सो नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, व्हाट इट कॉल एज. Try to understand what is the overview of this standard. Introduction and scope we are going to see. Definitions part, then some important terms, then we are going to see provision क्या होता है, contingent liability का decision tree, and then finally a disclosure. You are going to see it in this accounting standard. So 100 pages के book में you have to write something. Today I am going to give you 100 pages book simultaneously. Why? Reason is very simple, because this standard is important from exam point of view. For writing, I want everyone must know the definition of provision, contingent liability, and contingent asset. So friends, I request you all, today we are not going to take a screenshots. Why screenshots are we are not going to take? Because this standard we are getting 2 days. ICAI को yes धन्यवाद कि उन्होंने मुझे 2 दिन दे दिए. Yes, thanks to ICAI that they have given me 2 days for this accounting standard, and I will complete it properly by giving notes in the writing. Okay beta, so we will write it in your 100 pages book. चलिए. Okay. ठीक है. So friends, first I'm going to explain you applicability of this standard. Okay. So what we are going to see is 29. We are going to see recognition, measurement, and disclosure of provision, contingent liabilities, and contingent assets. Okay. So no need to write this. Applicability. Applicability, this standard is not applicable for the following provisions, which are arising from the financial instruments. So financial instrument क्या होता है? We do not have it in the syllabus. So don't worry. Financial instrument, you are going to see it in the CF final. So financial instrument को हम लोग नहीं देखेंगे अभी फिलहाल के लिए. ठीक है. Next, arising from the executory contract. Sir, executory contract, wait for some time. I'm going to explain you the definition of executory contract, and even in law, I hope you have covered this executory contract and onerous contract definition. So wait for some time. I'm going to explain it. And covered by another standard. If it is covered by the another standard, but obvious, this standard is not applicable. So no need to write this. Now what we are going to write is a provision. Provision, we have to write it in the 100 pages book. Okay. S15 beta, we are going to start on Saturday. S15, we are going to start on Saturday. Yes, write down the definition. First, I will explain you and then we'll write it. Provisions is a liability of uncertain timing or amount.
Okay. If this is a liability, what is important? This is a liability. Okay. So this is a liability of uncertain timing or amount. Sir, uncertain. If we are not 100% sure about our liability, what will be the amount? We know what we are going to pay, but not exact amount. Sir, if exact amount is not known, then it is a provision. इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं प्रोविजन. सर प्रोविजन मतलब क्या होता है? सर प्रोविजन मतलब जिसकी अमाउंट हमें पता नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट, पर ये पता है कि मेरी ये लाइबिलिटी है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोविजन. ओके, सो वेरी सिंपल. प्रोविजन इज बेटा एग्जैक्ट अमाउंट एंड टाइमिंग इज नॉट नोन. सर मुझे शादी तो करनी है, पर कब करनी है ये मुझे पता नहीं, तो ये क्या होगी? इट्स अ प्रोविजन. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज, आई डोंट नो एग्जैक्ट दी अनसर्टनटी अबाउट द टाइमिंग्स. सर शादी का अमाउंट नहीं पता होगा, सो इसलिए इस प्रोविजन नहीं होगा. बट इफ द अमाउंट इज नॉट नोन एंड टाइमिंग इज नॉट नोन, देन इट्स अ लाइबिलिटी है, पर यू डोंट नो द अमाउंट एंड टाइमिंग, देन इट इज कॉल्ड अ प्रोविजन. सो बेटा 5 बार तो भी याद करना है. प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी. Provision is a liability of uncertain timing and amounts. A provision is a liability of uncertain timing and amount. So provision is a liability of uncertain timing and amount. So provision is a liability of uncertain timing or amount, and provision is a liability of uncertain timing or amount. Sir, provision की definition समझ में आ चुकी है? रट्टा मार है. By heart this definition. By heart this definition. Yes. लिखो लिखो लिखो. चलो. And same it done. Same it done. After writing this, write down done in the comment section. ओके अपने बीओएस ऐप पे आना है आपको, और कहां पे कमेंट्स करना है बेटा? यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं होगा. यू कैन नॉट comment on YouTube channel. We have a separate application, sir. We are leaders, so we have a separate application. Board of Studies का ऐप है, उसमें आ जाइए और कमेंट कर दीजिए. राइट डाउन डन. ओके चलो. नाउ व्हाट इज द लाइबिलिटी सर? Liability definition is also Rattamar definition. Liability is a present obligation. A present. It's a present means what? It is more than 100%. You cannot avoid it. It is probable is more than 50% chances. But if it is a probable, no probable obligation is a present obligation, which is arising from the past event. In past, you have done something. That's why you arise this liability. That is a present obligation, and the settlement of which is expected to result the outflow of future economic benefit from the entity. Okay, so see, break this definition. You can write in next line beta. So after breaking the sentence, you can write it on the next line. So beta आपको करना क्या है? ये definition को लिखते टाइम, ये definition को लिखते टाइम अच्छे से इसको अलग अलग लाइन पे लिखना है. ओके, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट. सो प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज इंपॉर्टेंट, पास्ट इवेंट इज इंपॉर्टेंट. द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड, the settlement of which is expected to result in an outflow of the future economic benefits from the entity. From the entity. So you can write it on 4 lines and write down then liability definition over. Okay, write it in the comment section. Liability definition over. Okay. बेटा टेक्निकल स्टैंडर्ड है. दिस स्टैंडर्ड इज easy to understand but very difficult to write it on paper. Okay, so Sanket sir is giving you by heart definition. क्या करना है? रट्टा मार points, you have to write it properly. So अच्छे से लिखो. It is a present obligation arising from the past events. So we are going to see some examples. Don't worry, we are going to see some examples. Yes, it is a present obligation arising from the past event. सिर्फ एक लाइन पे इतना ही लिखना. द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड. सेकंड लाइन पे इतना ही लिखना. थर्ड लाइन पे टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड विल फ्लो टू द एंटरप्राइज फ्रॉम द एंटरप्राइज. इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द डेफिनेशन. लाइबिलिटीची डेफिनेशन लिहा रे, फटाफट लिखने का.
जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, व्हेन यू गॉट द स्टैंडर्ड, लास्ट में जाते जाते लाइक बटन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा इसे ट्यूब के चैनल को। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा, एंड यू वांट टू डू रिवीजन, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अवर वेबसाइट बेटा, और यूट्यूब चैनल पे ये पूरा का पूरा फ्री रहने वाला है। सो डोंट वरी, ये सभी आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, और आप लोगों को ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। और जो बच्चे लाइव में आ रहे हैं बेटा, माशाल्लाह एक नंबर काम कर रहे हो आप लोग। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइव में संकेत सर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो बीओएस ऐप के साथ। बट बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखा तो ये मिस कर जाओगे, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज 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 डोंट मिस अ सिंगल सेशन ऑफ लाइव वन। ओके, सो कोई भी ये मिस नहीं करेगा, और लाइव चैनल पे ही आना है आप लोगों को, बीओएस ऐप थ्रू ये सेशन देखना है। एंड इफ यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क इट ऑन बीओएस बेटा, हमारे लोगों को आप लोग क्वेरीज भेज सकते हो, हमारी फैकल्टीज आपको लगे तो रिलेवेंट लगेगी तो रिवीज आपको कमेंट का रिप्लाई भी आ जाएगा, डोंट वरी। यस, ओवर ओवर ओवर। Surattamar, over. What do you mean by present? So present means what? Liability definition, yes, sir. Please, liability definition three times, sir. Three times. Present obligation arising from the past event. Present obligation arising from the past event, the settlement of which is expected to result in the outflow of the future economic benefit from the entity is called as a liability, sir. It's called as a liability. Present obligation arising from the past event, sir. Wapas, present obligation arising from the past event, the settlement of which is expected to result in the outflow of the future economic benefit from the entity is called as the liability. Present obligation arising from the past event, the settlement of which is expected to result in the outflow of the future economic benefit from the entity is called the definition of liability. Okay. Yes. Definition over, sir. Okay, easy. So what is present? Please explain the word. What is present? Present means existence on the balance sheet date. Existence on the balance sheet date, and it is probable means 50% more chances. 50% more chances that available of the evidence on the balance sheet date. So present मतलब क्या? Existence of the balance sheet date, and प्रोबेबल है कि आपसे पैसा जाएगा, प्रोबेबल दैट देयर विल बी आउटफ्लो। सी द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टैंडर्ड। फर्स्ट मिनट से आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इफ यू फोकस ऑन दिस वर्ड्स एंड इफ यू गॉट टू नो द लॉजिक हाउ टू राइट द आंसर इन द एग्जाम बेटा, you are going to get full 5 marks, and this question is mandatory. Remember, this standard is very favorite of examiner. Whenever paper setter, he always gives you this question on the provision, contingent liability and contingent asset, because this is very important in the real life also. And therefore please better don't ignore this standard, Ray, which is existence on the balance sheet date, and it is probable that the based on the evidence available on the balance sheet date. So probable matlab kya? Probable means more likely than not, and more likely than not means more than 50% chances to get the obligation. Sir, obligation आने वाला है, ये 50% से more chances है, so it is called as probable. And if it is less than the 50%, then it is called as a possible obligation. So possible and probable obligation, the two words are very very important, sir. So present obligation or probable obligation, please write this definition also. What is present and what is probable? Write down, write down, write down. Waiting for your comment, sir. Over with present and probable. So comment present and probable को over कर देना. Yes. I hope you are enjoying. बहुत दिनों के बाद मिला हूं आपको. एक्चुअली आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज बेटा गोइंग ऑन. So present and probable definition over. Please write it properly, and while writing, focus, focus, focus. अरे वाह, गुड अटेंडेंस.
Okay. Smita ji, thank you. Deepash Rai ji, thank you, beta. And Mr. Jagpati ji, yes, beta. Enjoying, very good. Chaliye. So we will move to next concepts of provision is over. Now we are going to move to, before moving to next beta concept, first I will ask you some questions. So questions, okay, we'll do it after obligation. Okay. After obligation, we'll do it. Okay. After obligation. Okay. Chalo. What is obligation? Obligation is a duty or responsibility to act in a certain way arising from the binding contract, statute, or business practices. Okay. So see, if it is a binding or statute, it is a legal obligation. What is called as legal obligation. And if it is a by practice or custom, custom is traditions to maintain the good relationship, then beta it is called as constructive obligation. Constructive and legal. Okay. Have you done it in the law? Have you done it in the law? Yes, beta, law mein hua hai kya? Legal obligation and constructive obligation, these two words, don't know. Yes. So, constructive obligation is by practice or custom. Okay. Is by practice or custom. Practice or custom. See, write the definition. What is the obligation? Obligation, you have to write it, beta. Constructive means it is by practice or by custom. So it is not mandatory. You're not liable to pay it. Okay, we will see some examples. We'll see some examples of constructive obligation. But see, if it is binding on you, it is called as legal obligation. But if it is not binding on you, if it is by business practices or customs to maintain the good relationship, this is called as constructive obligation. So one is legal obligation and second one is a constructive obligation. Constructive is by customs or maintaining good relationship. Okay, write it in the 100 pages book, beta. Why I'm telling you to write it in the 100 pages book? Because I got the sufficient time to cover this accounting standard. And I just want to tell you that some points are Rattamar points and therefore you have to write it in your 100 pages book. You have to by heart these points. Okay. I'm giving you two examples, two illustrations and beta, you just solve these two illustrations. So your concepts will get 100% clear. 100% clear, beta. These first two examples, or you can complete your three examples, beta, three examples. Okay. So you read it and I am giving you exactly 8 minutes to 7 minutes, beta, because yes, I will tell you today I was not going to conduct your session, but I have last day of Panchakarma. That Ayurvedic treatment is going on and this is a Virechan, which is the last day ka session hota hai, jisme yes, I'm facing a lot of problems during this treatment. So last day ke liye Virechan is a, is a pro, you can check it on website or on YouTube. So this is last day of my Panchakarma and therefore, beta, I'm finding a problem of my stomach. So please excuse me for next 5 minutes. Till that time, question 1, question 2 and question 3, you will read it. Okay. Chalo. So 3 questions hai.
स्टॉप वॉच का टाइमिंग लगा देता हूँ. So exactly, you read these questions. I control myself for last 10 minutes. So give me 5 minutes ka break only. I will come back in 5 minutes. Over with these questions. So very simple, sir. Last 10-20 seconds. Yes, beta. Rituraj, I'm good now.
After every 25 minutes, I will need a break. So I will give you a break at 7 o'clock now. Okay. So, yes, I'm going to tell you the answer now. Yes, friends. See the first question. Are these items are provisions? Provision for depreciation, but obvious not. Provision is a liability. Provision means you can write this. Yes, write this beta. In 400 pages book, provision means. So this is beta. I already uploaded these questions on our BOS app. Provision is a liability. And these items are not payable. Therefore, we won't call it as S29 is not applicable. S29 is not applicable for this. Provisions means liability and these items are not payable. Therefore, S29 is not applicable. Okay. So page number nahi hai. These are my questions. So you won't find it in the study material. Same questions because I just want to increase your understanding level step by step. So this question may, this is not a provision. How you are going to record this? Asset, reduce from asset, reduction from asset. How you are going to present these items in the balance sheet? Reduction from the asset. Okay. So question one ka answer over. You can write it in the 400 pages book. Provision means liability. These are the items are not payable. Therefore, AS29 is not applicable. And second one, how you are going to record it? Reduction from asset. Reduction from asset. Okay. प्रोविजन मीन्स लाइबिलिटी तो ये आप रिकॉर्ड नहीं करोगे सो वेरी इंपॉर्टेंट अंकुर आई होप यू गॉट योर मिस्टेक दीज आर नॉट प्रोविजंस अनमोल आई होप मिस्टेक समझ में आया ये लाइबिलिटी नहीं है ये लाइबिलिटी नहीं है ओके वेरी गुड सेकंड क्वेश्चन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसएस लिमिटेड passed a resolution on 30th March 2012 to carry out major repairs to machinery and expansion of business. The total expenditure amounts to 10 lakhs and 50 lakhs for repairs and expansion respectively. Repairs and expansion of business took place in May 12. 31st March is it financial year. Should you record this provision? So what is your answer? What is your answer? Okay. See बेटा क्वेश्चन 2 का आंसर लिख के देता हूं राइट डाउन द आंसर provision means a liability. Write down. Provision means a liability which is present obligation. Which is present obligation. Here,
entity does not have obligation to repair, repair and expansion. Entity can skip the decision. So, no need to make, no need to provide for expenses. Understood the second answer? Understood the second answer, beta? Here you do not have a liability, which is a present obligation. Okay. Okay. So no need to provide for expenses. नेंशी सक्सेना, बेटा आप गलत गए बेटा। ये खर्चा आप लोग पोस्टपोन भी कर सकते हो, सीआरओ की इसलिए हिंदी में बता रहा हूं। ये खर्चा आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। 31 मार्च को आपकी ये लाइबिलिटी नहीं है बेटा। ओके। सो क्यों करनी है ये लाइबिलिटी नहीं है तो? सो देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ओके। सो क्वेश्चन 2 ओवर, क्वेश्चन 1 ओवर, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, Srinivasan ji, cash flow statement will take by another faculty. Don't worry. So मैं नहीं लूंगा बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, अनदर फैकल्टी विल टेक। ओके। क्वेश्चन 3, ऑन 20th March 2017, एक बार तीनों टर्म्स का मीनिंग हिंदी में समझा दीजिए शॉर्ट में। ओके नैंशी, हिंदी में समझा देता हूं, डोंट वरी। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन आई विल टेल यू। Board of Directors made a resolution in the board meeting that technical errors in the car will be rectified even if warranty expired. But this matter is not announced to the public. Would this be considered as an obligation? Would this be considered as an obligation? Very good, Suman. नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। श्रुति जी, नहीं। शिवाज डरा लास्ट डे इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। ममता जी, सेकंड वाला समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया बेटा? देख बेटा, इसका मीनिंग क्या है एक बार हिंदी में बता देता हूँ। मेजर रिपेयर्स एंड मशीनरी का और एक्सपांशन हमें करना है 30 मार्च को। भाई मुझे शादी करनी है तो मैंने डिसीजन तो नहीं ले लिया तुरंत शादी करने का। ओके। सो ये एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ ऐसा मैंने मन में ख्याल लाया कि मुझे शादी करनी है। इट डजंट मीन कि मैंने 31 मार्च को शादी कर लिया। ओके। सो सेम थिंग कि मेरे मन में ख्याल आया कि मेजर रिपेयर और मशीनरी को करना है और एक्सपांशन करना है। इट डजंट मीन कि मैंने ये कर लिया। तो लाइबिलिटी कब बनती थी? यदि मेरे यहाँ पे कोई आके काम करता था तो लाइबिलिटी बनती थी। भाई कोई काम करने के लिए आया ही नहीं है, सिर्फ मन में ख्याल आया तो मैं क्या प्रोविजन करवा दूं क्या? नहीं चलेगा। ओके। सो इसलिए नंबर 2 का क्वेश्चन जो है वो नहीं, आपको याद रखना है कि इसकी प्रोविजन नहीं करनी है। नैन्सी ने पूछा था कि सर कैन यू एक्सप्लेन, जो अभी तक हिंदी में एक बार बता दोगे क्या? यस सर, क्यों नहीं बताएंगे बेटा? क्या नाम था? देख बेटा,
लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जो आपको पे करना होता है। प्रोविजन मतलब जो लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होगा? लाइबिलिटी मतलब जो पे करना है, पर उसकी अमाउंट आपको पता नहीं है, कितना अमाउंट होगा और कितना कब पे करना है ये आपको पता नहीं होगा, तो उसको हम लोग प्रोविजन बुलाते हैं। ओके, प्रोविजन मतलब एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कि आज की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मुझे पे करना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो क्यों आया? क्योंकि पास में मैंने कुछ तो भी किया होगा, कुछ खर्चा मैंने किया होगा उसके वजह से, या कुछ लिया रहेगा उसके वजह से, पास्ट के वजह से ये क्या हुआ, पास्ट इवेंट। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे कि सेल करना, सेल करने की वजह से मुझे वारंटी देना पड़ेगा। सो पास्ट में मैंने सेल किया, तो उसके वजह से मुझे वारंटी देना पड़ेगा, और ये वारंटी देना, ये मेरा आउटफ्लो होने के चांसेस है, तो मेरे जेब से जाएगा, पर एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं कितना जाएगा, तो इसके वजह से मैं इसकी प्रोविजन करूंगा। आपने बिजनेस किया तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, पर इनकम टैक्स की एग्जैक्ट अमाउंट आपको कब समझ में आएगी? जब आपका रिपोर्ट फाइनल होगा। सो 31 जुलाई तक के आपके पास डेट होगी, पर 31 मार्च पे ही आप लोग इसकी प्रोविजन करके क्यों रखोगे? क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट आपको आप कैलकुलेट करोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, और अदरवाइज आपने जिसको हायर किया होगा वो कैलकुलेट करेगा। सो एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, टाइमिंग भी पता नहीं है, तो ये जब पता नहीं, पर इतना पता है कि मेरी लाइबिलिटी है, मुझे टैक्स पे करना है, तो इस केस में क्या होगा? इट्स माई ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है। प्रोबेबल का मीनिंग क्या होता है? 50% से ज्यादा चांसेस होना कि मुझे ये पे करना पड़ेगा, तो इसके वजह से इसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। ओके, आया समझ में? यस। अभी ऑब्लिगेशन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो लीगली हो सकता है, या आपने पास्ट में ऐसे कुछ खर्चे किए रहेंगे। भाई पास्ट में खर्चे कैसे किए रहेंगे? तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, अभी ये क्या है वो देखेंगे। लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सो ये दो वर्ड्स के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लीगली मतलब आपको कंपलसरी करना ही है, पर पास्ट में आपने दिया था। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल हमने बोनस दिया था, पिछले के पिछले साल भी बोनस दिया था, उसके 4 साल पहले भी बोनस दिया था, तो एम्प्लॉयज को बोनस तो मिलके रहेगा। ये आपकी एक, आपका एक क्या बोल सकते हैं, अच्छी साइड है कि आप आपके एम्प्लॉयज को बोनस देते हो, तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगा। सो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, मैंने किधर भी उनके साथ लीगली नहीं बोला है कि आपको बोनस मिलेगा, पर मैं पास्ट में ये करता रहूंगा, इसलिए मैं उसको ऑब्लिगेशन के लिए जो मैं देता हूं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। नैन्सी सक्सेना। आई होप आपको पूरा मीनिंग समझ में आया होगा। सो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सब लोग रुके हुए थर्ड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए। ओके, 20 मार्च, board of directors made a resolution in the board meeting. See, see beta, here first you will write the definition of liability. क्या करोगे? Yes, write definition of liability. Answer 3, write definition of liability. Okay, warranty period. See beta, now you can prepare your own sentences. It is just for your concept clarity. In exam, you do not you should not present it in the T format. It is only for your warranty period expires and not expires. If warranty period expires, beta, no legal obligation. Legal obligation. Okay. Now you ask to yourself, mere decision in board meeting, in board meeting, not constructive obligation if not announced to
पब्लिक, पब्लिक को हमने अनाउंसमेंट दिया नहीं है, नॉट अनाउंस टू पब्लिक। Devraj already covered definition of liability. Please watch my previous 30 minutes. No provision. No provision. If huge publicity in media for board decision, then beta company cannot avoid obligation, and in that case this is constructive obligation. Then in this case provision. In exam beta, you do not have to write in this way, you will write it in the paragraph form. You will write it in the paragraph form. Okay, this is only for your concept clarity. Okay, so constructive obligation means what? It is not legal obligation, but company beta gives it in the good faith, this obligation, and therefore it is called as constructive obligation. Got the concept? Say yes or no beta. Got the concept or not? Expires and not expires. Goes to yes. Very simple. So it depends on the warranty period. So now you are aware about these three words: present obligation, liability, past event, and obligation is legal or constructive. So these are new words. Okay. So third example, over. Question 3, over. Board. This is board decision. तनु हिंदी में एक्सप्लेन करो बोल रही है। बेटा देख, कंपनी ने वारंटी दिया हुआ है। देख क्या हुआ, कंपनी ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंजिन्स में डिफेक्ट निकला, जो आगे जाके लोगों को तकलीफ दे सकता है। कंपनी बेटा रेप्यूटेड कंपनी है, फोक्सवैगन के साथ हुआ था ये, तो सिर्फ बता के रख रहा हूं। तो उन्होंने पूरे कार का रिप्लेसमेंट दिया था, आई थिंक वेंटो कार में हुआ था शायद से ये। तो वारंटी पीरियड खत्म होने के पहले तो वो ये लीगल ऑब्लिगेशन है। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वारंटी पीरियड खत्म हो गया, भाई तू कौन और मैं कौन, वारंटी खत्म होने के बाद चल अभी निकल जा बोलूंगा मैं। पर कंपनी के बेटा एक तत्व है, प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग कार को बदल के दे दो, और उन्होंने इसके अनाउंसमेंट यदि मीडिया में कर दी कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं गुड फेथ में। गुड फेथ मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। हम लोग अच्छे हैं इसलिए ये चीज करके दे रहे हैं, हम लोग रिप्लेस करके दे रहे हैं, हमें पता है कि हमारे कार में डिफेक्ट है और बाद में आपको ये तकलीफ देगा। अभी वैसे तो 3 साल खत्म हो चुके, मेरा और आपका यहाँ पे रिश्ता खत्म है ऐसा मैं बोल सकता हूँ। पर मैं एज अ कंपनी मैन्युफैक्चरर बोर्ड में ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कंपनी का एक ट्रस्ट है आप लोगों का मेरे ऊपर, वो मैं ब्रीच नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपको गाड़ी बदल के दी, मैंने इंजन बदल के दिए। तो ये केस में क्या होगा, ये मेरी प्रोविजन बोली जाएगी और ये मीडिया में मैंने अनाउंस किया। यदि मीडिया में अनाउंस नहीं करता हूँ तो प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, पर इसका बोलबाला किया तो बेटा प्रोविजन करना पड़ेगा।
How energetic you are since during the treatment. Since I gone through the same treatment makes me very tired. But I am also very tired actually. It's only your love, but which shows me or which gives me better energy. Okay. So please, thank you once again. चलिए, सुबह से सोया ही था मैं. ओके. आई होप हिंदी में भी आपको समझ में आता है. मेरा हिंदी हालांकि इतना अच्छा नहीं है, फिर भी कुछ तो समझता रहेगा. ओके. चलिए आगे निकलते. वारंटी पीरियड हो गया बेटा अच्छे से, क्योंकि हमारे जो एमपी यूपी वाले बच्चे वो तो बहुत बढ़िया है हिंदी में. हम लोग महाराष्ट्र वाले थोड़ा सा कमजोर होते हैं आपसे. ओके. सी नाउ, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, I will explain you the concept of now recognition of provision. First, I will explain you the concept of recognition of provision. Come to 100 pages book. Come to 100 pages book. Recognition of provision. It's a Panchakarma Dipashraya. Dipashraya. चलिए. Provision should be recognized only if it satisfies the all conditions. If it satisfies the all conditions. Beta. Okay. Minimum 5 to 7 questions we have to finish before break. हाँ जी बेटा. 5 to 7 questions. Okay. After break, we are going to see only questions. ठीक है. Provision should be recognized only if following conditions are satisfied. The entity should have present obligation. Outflow of future economic benefits should be probable. And reliable estimate can be made by heart. Rattamar. Rattamar definition. Provision should be recognized only and only if entity have the present obligation. Obligation might be legal or constructive. Now you understood what is legal and constructive obligation. Arising from the past event. Outflow is probable and reliable estimate can be made. Okay. Yes. And present obligation arising from past event. Now what is present obligation arising from the past event? See the example. In almost all cases, it will be clear when past event has given a rise to the present obligation. In rare cases, it may be disputed either certain events have occurred or whether those events result in the further obligation. Example, in a lawsuit, in such a case, an entity determines whether present obligation exists on the balance sheet date by taking into account all available evidences, including opinion of experts. So better wait for some time. I'm going to give you examples. So first you note down all these 3 points. So whenever present obligation, provision definition is there, so you have to write this in your provision. Okay. So facts of the case के बाद जो provision होता है, in this provision you will write these 3 sentences. The entity should have present obligation, outflow of the resources, future economic benefits should be probable, and reliable. What is probable? Probable means more than 50%. And reliable estimate can be made. If you fulfill all these 3 conditions, beta, you should record as a provision. Chalo likho. You should record it as a provision. Beta, study material questions is already covered in my notes, so don't worry. Study material के सभी questions cover कर दिए हैं. Why I am taking from apart from the study material? Reason is very simple, because this standard requires a depth knowledge, and how to present the answer is very important for this standard. So but I am giving you extra examples.
सर डन करके लिख देना। सर कंडीशंस ओवर, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। 100 पेजेस के बुक में लिखना है बेटा, 100 पेजेस के बुक में लिखना है। टुडे इज द मैक्सिमम अटेंडेंस या कैसे गया इतना अटेंडेंस बेटा आज? गुरु मंत्र सीरीज आई एम टेकिंग इट इन इंग्लिश ओनली। हिंदी में 1 or 2 वर्ड्स आई एम टेकिंग इन दी हिंदी। संकरण जी। यस बेटा। ओवर। हाँ जी। नाउ हाउ टू मेजर दिस? सर एट व्हाट अमाउंट? मेजरमेंट मीन्स एट व्हाट अमाउंट? At what amount you are going to record this? Okay, it is very difficult task. Sir, at what amount? Because exact amount is not known. Okay, you know the rough amount, reliable amount. Okay, reliable estimated amount. You know the exact amount, you are not aware. Okay, so the use of estimate is an essential part of the preparation of the financial statements and does not reduce your reliability. That is the especially in the case of provision, which requires a lot of professional judgments. Lot of professional judgments. The estimation should be based on the best estimates available on the balance sheet date, and entity should consider the following. Okay, professional judgment लगेंगे measurement में. What are the evidences available? Events occurring after balance sheet date. You can see the experience of the management. Management will help you out. Independent opinion. You can take independent opinion to have the amount. And last one, risk and uncertainties. रिस्क एंड अनसर्टनिटीज। सी बेटा एक बार हिंदी में मेजरमेंट कैसे करना है सर? अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करें? अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करें इसलिए आपको कुछ एक्सटर्नल एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। एविडेंसेस मतलब क्या? पुरावा। ओके, तो जो एविडेंसेस आप लोग लेके आओगे, एविडेंसेस वो लेके आना है आपको, सफिशियंसी उसकी होनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको प्रोविजन 31 मार्च को करनी है, पर उसका अमाउंट आपको 31 मार्च के बाद समझेगा। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जिसको बोलते हैं, एस 4 में आपने ये कवर कर लिया है। एस 4 में आपने कवर कर लिया है कि बाद में कंफर्मेशन मिलेगा, ओनली एग्जिस्टेंस तो होने वाला है 31 मार्च को, तो वो भी आपको एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा। आपका मैनेजमेंट, बेटा मैनेजमेंट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे एग्जैक्टली अमाउंट पता होने में। सो अकाउंटेंट विल टेक दी हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। और एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप लोग ले सकते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं। एंड रिस्क एंड अनसर्टनिटीज भी इसमें कंसिडर की जाएगी। रिस्क एंड अनसर्टनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है कि अमाउंट ढूंढने के लिए। एक तो सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। सिर्फ ये दो चीजें लिख के रखो, ये दो चीजें, मेजरमेंट। 100 पेजेस के बुक में लिखो, मेजरमेंट, अ सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम और वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। इन 100 पेजेस बुक राइट डाउन मेजरमेंट, हेडिंग दो, गिव हेडिंग मेजरमेंट एंड राइट इट सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम और weighted average of all possible outcomes which is called as expected value. Now how to solve this? बेटा उसके लिए हमें we have to see some questions. We'll see some questions. Okay, so write down measurement. Measurement. But I will take a break after 2 questions, 4 and 5. 2 questions के बाद ब्रेक लेता हूं। So write down measurement over. So there are two methods of measurements. Yes, Priya, we'll take a break after 10 minutes. 4 and 5 questions will solve and then I will take a break of 10 minutes. Okay. So wait for only 10 minutes.
4 and 5. सो मेजरमेंट के दो मेथड्स है. कौन से दो मेथड्स है? सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम. सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम और दूसरा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय सॉल्विंग इलस्ट्रेशन 4 and 5. ओके. बड़ा ब्रेक सिर्फ 10-15 मिनट का होगा. आज के दिन सिर्फ संभाल लो मुझे. Illustration 4 and 5. Today we'll complete with the provision part. Contingent liability and contingent assets we'll take it in the next session. Okay. So how many questions? We'll solve up to 12 questions. We'll solve up to 12 questions. Okay. So before break, two more questions. An entity sells goods. Try to understand. Acha, till now any query? Till now any query? चलो जल्दी से बताओ. अभी तक कोई क्वेरी है या नहीं है? Any query? Any word you haven't understood? चलो पूछो. Yes, you can ask me questions. No questions till now. Should I move to question number 4? Yes. Tell me, tell me, tell me, tell me. बेटा बैठ के वो मजा नहीं आता है टीचिंग में, इसलिए बैठा नहीं हूं. चलो बोलिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 4. You want to read it? Estimate means exact amount is not known, beta. You will understand it now. Estimate. Don't worry. You will understand it now. हाँ, Ruturaj, it is probability. Yes, beta. You will understand it now. An entity sells goods with a warranty. Okay, with a warranty. Sales. Sales is a past event. Sale is a past event. And warranty is a provision. With customer are covered for the cost of repairs of any manufacturing defects. So warranty of manufacturing defects first 6 months में हुआ तो. If defect occurred within 6 months. If minor defects were detected, cost of 1 million. 1 million means 10 lakhs. 1 million means 10 lakhs. And if major defects were detected, it will be 4 million, 40 lakhs. The entity past experience, 75% no defects, 20% minor, and 5% major. Can you calculate the provision amount? Compute the provision amount. Compute the provision amount. Yes, anyone? This is called as expected value method. %75 into 0 plus 20% of 10 lakhs and 5% into 40 lakhs. When different possibilities, different provisions. You can check. So 75% you think we no need to replace anything. So it's
zero provision. 20% of sales may ask for warranty, but it's a minor defect. So you will consider only 1 lakh. And 5% into 4 lakhs, 40 lakhs. So what will be the answer? What will be the answer? Very good, Ram. So your provision will be 4 lakhs. Your provision will be 4 lakhs. Four lakhs is a provision. 4 लाख आएगा बेटा, 4 लाख. I lost interest in accounts without you. Why, Gayatri ji? Thank you, beta. Merin. I feel motivated by looking your dedication. Thank you, beta. So, expected value method, you can write the answer. You can write the answer. 75%. एक लाख का 20%, 20,000. 40 लाख का 5%. 10 lakhs का 20%, sorry. 2 lakhs and 40 लाख का 5%, 2 lakhs. No, but it's correct. It's a 4 lakhs. Sir, it's a simple, you can write it like a provision. What is the amount of provision? It's very simple. You can write the measurement by using the expected value method and only this answer. It is of only 2 marks question. It is only a true or false mein aayega. They may ask you this question in true or false. What is the provision amount? Or options mein. Okay. Last question before break. Last question before break, beta. See, please don't skip this, S in option. Okay. Don't keep this. The standard is very easy once you got the grip on wordings. Okay. So if once you understood how to write the answer in exam, this standard is very easy and we are going to do practice for this standard. Don't worry, मैंने इसके लिए बहुत अच्छे questions भी निकाल के रखे हुए and I am going to give you the answer properly. There are some questions now after question 6 in which I am going to tell you how to write the answer. This is an obligation to restore the environmental damages in the area surrounding in the factory. In the area in the surrounding factory. अच्छा. तो restore करो environmental damage. Expert advice indicates that restoration will be carried in 2 distinct phases. See, 2 distinct phases. Now, beta, first phase is 2 millions, 20 lakhs. Okay. So restore the environmental damage. हिंदी में बोलना चाहूंगा कि जो भी डैमेज हुआ है उसको आपको ठीक करके देना पड़ेगा. रिस्टोर करके देना मतलब ठीक करके देना पड़ेगा. रिस्टोरेशन ये 2 phases में कैरी होगा. Restoration will be carried in 2 phases. The first phase requires expenditure $2 million, expenditure $2 million to remove the contaminated soil. Contaminated soil remove करने के लिए बेटा, contaminated means what? दूषित. दूषित. Okay. So जो भी polluted बोल सकते हम लोग या खराब बोल सकते, soil from the area. And second phase, commencing 3 years from the end of first phase to replant the area with a suitable trees and vegetations. Okay.
सो सेकंड फेज रीप्लांट, वापस से पौधे वहां पे लगाने पड़ेंगे आपको. द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ रीप्लांटिंग after 3 years is 3.5 millions. That is 35 lakhs. Okay, 35 lakhs. SS uses cost of capital, that is called as discounting factor. Discounting factor. And tax rate is to confuse us. Tax rate is to confuse us. We never use tax rate. After tax factor, we never consider. Before tax factor. Financial management mein, you will understand it. Okay. So discounting factor is always before tax. So you have to consider 10% discounting factor. Today's date is 31st March 2013, 12. The first phase after 1 year, that is a 2 million. And phase 2 after 3 years from the end of the first phase. From the end of the first phase. Okay. So see year. Year 13. 13 May you will complete with first phase over. And 2016 second phase over. What is the cash flow? 20 lakhs. And how much you are going to pay? 35 lakhs. Discounting factor. कैलसी किधर है? Discounting factor. 20 lakhs after 1 year. 1 point. How much? 1.1 is a discounting factor. So what do you have to do? 1.1. 1 divided by 0.9091. Take up to 4 digits. 4 digits. And 2016 from 2012, it is divided by 4. So is equal to 1 divided by, yes, one more time, 1 divided by 1.1 and is equal to 4 times. 4 times. What is the answer? 6830. In accounting standard 19, we already covered this part. So discounted cash flow. $18,18,200. $23,90,500. So what is the provision that you will made? 42,08,500. This is the amount of provision. So provision you will do at discounting factor, today's rate. You should know this concept. Actually, this is CA final question, but you should know if you are going to incur this provision afterwards, you will provide it at the present value. This is called as present value of the provision. Yes. No, beta Priya, there is no formula. Yes. Easy, beta. Easy provision. See the beauty of online classes. First thing. So I request you all, students, now, yes, you can write this answer. This is answer number 5. Today I am not feeling well, but still giving you my 100%. Suppose if these classes are face-to-face classes, so beta is very difficult. Compulsorily, I have to give holiday in that case. Though I am not feeling well, I have given you my 100%. जितना हो सकता है. मेरे से capacity नहीं है. Means once you go through this process, you will understand it. Still, beta, full session,
I have not sat for a single minute. Okay. And this is how the helpful online classes are. And institute is giving you these classes are free of cost. Is very important. Means I request them many times. You don't give these classes free of cost. At least take some charges, 500, 1,000 rupees. So that seriousness will be there. But beta, it's a policy of institute. We cannot change it. But the problem is that students, you are not serious about your studies. And that is only the reason you might feel problem in online classes. You have to be very consistent for online classes. See, you are saving your 100% time by not traveling to your class place, not enjoying with your friends. But this will give you 100% result if you are serious. Only one thing is bad about the online classes, that is only about your seriousness. And if you sit for 10 to 12 hours, so on Zoom sessions, normally I take it on Zoom sessions and my students, I interact with them, not through this, um, you are also my student, no doubt in that. But beta, some Pimpri Chinchwad branch ke students where I am taking on Zoom, and beta, they are very interactive. Daily I can interact with them, and it's possible is only because of students from small area also can join these classes. One of the students, these classes are in Hindi, but still some South Indian student they join these classes. Okay, Dhanashri is there, one student who is from direct entry, and now she learned Hindi also through these classes. Okay, so beta, I request you all, please take a benefit of online classes. Don't get nervous. Don't get uh, you know you have to be very consistent for these classes, and please make sure you will save your time by attending it live classes. There are many students of mine, they are from Pune, but still they joined only for Zoom classes, not for better day-to-day classes, and they clear their exam. Okay, in first exam, and better there are students who attended my face-to-face classes, but still they did lot of time pass and they haven't cleared. Okay, till now. So friends, I request you all, take a benefit of all these classes and थोड़ा बच के रहना आपके फ्रेंड्स लोगों से, अकेले अकेले रहना अप टू ये क्लियर होने तक, एंड 100% रिजल्ट आपके साथ रहेगा. डू रिविजन प्रॉपरली, वॉच गुरु मंत्र सीरीज ऑन डेली बेसिस. तो गुरु मंत्र सीरीज भी आपने देख लिया तो बहुत सारा फायदा होगा. ओके, चलिए. हाँ जी बेटा. ओके, तो ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू इट आफ्टर ब्रेक. सर ब्रेक लेते 7:35 तक का. ब्रेक लेते 7:35 तक का. 15 मिनट्स का ब्रेक मुझे लगेगा, एंड देन विल कम बैक.
come to question number 6, beta. Come to question number 6. Have you solved question number 6? Okay. See, beta. SS Limited has taken a building on lease for 15 years. 15 साल का लीज है. As per legal lease agreement, lessee has obligation to restore the building in its original condition at the end of the lease term, or alternatively pay estimate cost of restoration to the building owner. Should entity create a provision? At least tell me yes or no. At least tell me yes or no. Tell me बेटा, क्या लग रहा है आपको? See how to write the answer. Facts. Facts is X or SS Limited, sorry. SS Limited has taken a building on lease and restore the building at the end of lease term. Provision as per S29. Now this provision is a law provision. Huh? It's not provision definition. Provision should be recognized if all following conditions are satisfied. Entity should have present obligation. Write down this answer in my way. I will show you the first answer. Remaining answers will be same. Present obligation, legal or constructive, arising from past event. Number 2, outflow of future economic benefit, use shortcut, should be probable. Outflow of future economic benefit should be probable. Number 3, reliable estimate can be made. I hope you understood provision. Conclusion, past event
asset taken on lease. Present obligation only if building is modified. Building is modified. Then restoration cost is payable. So here, if no modification, no obligation. So provision is not required. So provision is not required. What is the event? Asset is taken on the lease. Asset is taken on lease is the event. So beta, no present obligation. क्योंकि हमने मॉडिफाई नहीं किया तो क्यों देना है, ओरिजिनल कंडीशन में दे देंगे. वो क्या पेंट बिन का प्रोविजन नहीं बोल रहे. यदि यू हैव मॉडिफाइड द एसेट देन ओनली प्रोविजन. अंडरस्टूड. सो दिस इज आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन 4. नहीं 6. ओवर ओवर yes. So googly question था, no provision. Shortcut, no provision. चलो 7 नंबर क्वेश्चन कितने लोग कर पाते देखते. 7 नंबर क्वेश्चन. See beta, you are going to see these questions in CA final also. All these questions you have to do in CA final also. Okay. Whatever you are studying in AS 29, you are going to see it in Ind AS 37 in CA final. Same. Only some extra questions will be there, like discounting, present value, that much extra points. Yes. चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए. Facts and provisions will be same. And conclusion. I hope you are clear with the concept now. गुरु मंत्र सीरीज आपको कहां पे मिलेगा? You'll get it on my channel, Guru Mantra series, if Institute allows me to. Okay. On ICAI Tube channel, beta, I do not have a problem. I will request Institute. If they agree, so no problem. Till that, you can watch it on my channel. Another point. Chalo. 7 number. Concept clear? Very good. Legal requirement to fit the smoke filters. Smoke filters बेटा अलार्म रहता है. देखो वो पानी दे बरसाता है, फिर कुछ हो गया तो आग लगी तो
Smoke filters nowadays is mandatory in commercial places. धुआं रहता है वो खींच लेता है, धुआं आने के बाद वो पानी शॉवर देता है बेटा, मतलब डायरेक्टली, या अलार्म बजाता है, पता है ना स्मोक फिल्टर? यस। Legal requirements to fit the smoke filters. As per new legislation, an entity is required to feed the smoke filters to the factories by 30th September 2017. So up to 30th September 2017, if it is delayed, the entity has to pay 5,000 penalty. The cost of purchase the smoke filter is 1 lakh. Not purchase up to 31st March 17. What is the due date? Fire water sprinklers. Okay. Staff है बेटा पार्थ. Make a provision of 1 lakh. No beta. No. No. See beta. Facts and provisions. लिखो. Facts and provisions are same. ILU 6. Conclusion. Past event. Running business. Running business. Present obligation. No. Till September 2017. Conclusion में no need of provision. Okay. Okay. Correct. So 7 number over. Facts and provision are same. ILU 6. So past event, running business, present obligation, no. No need of provision. 8 number. 8 number is 8 number is legal requirement to fit smoke filter session. Continuation to the above question, the entity has installed smoke filters till 31st March 2018. Phone करूँ. So in continuation to the above question, the entity has not installed the smoke filters till 31st March 18. Then in that case, tell me the amount. Yes, Madhav, your query is visible. So can you tell me?
Can you tell me? Yes, beta, can you tell me the answer on 31st March 2018? But daily I'm watching you continuously. 90 to 100 students are only attending ICAI classes. Today, I don't know. There are 150 plus students who are watching today's session up to last 1 hour, from last 1 hour. But I request you all, please don't miss a single session. Why you are not watching other sessions in morning? I think yesterday morning I was watching income tax session, and there are hardly 80 to 90 students who were watching the sessions. Please give feedbacks if you think anything you are not getting it, or if you want extra time or something like that. But don't miss ICS session, beta. We are taking it to the next level. We want to, reach this activity not at, small, or we don't want that only students who are having from not affording fees, they only see this session. These sessions are for all of you because you already paid 9,000 rupees for registration. And we are giving our best. Okay. So students, please, it's request to all of you, watch sessions till last minute. Okay. Very good. Very good. Who answered it correctly? Manohar Yadav. Very good, beta. Conclusion. Past event. Running business. Present obligation. Yes. Provision only of penalty. Only of penalty. If law is stringent, then rupees 1 lakh. Okay, so here, if law is very stringent, कड़क, बहुत निर्बंधता है, तो वो केस में 1 लाख की प्रोविजन करनी पड़ेगी. मतलब रोज आके बेटा हर रोज 5-5 हजार पेनल्टी लेके जा रहे. सो इन दैट केस, ओके, सो ओनली 5,000 की पेनल्टी. बट ऑन द सेफर साइड यू कैन राइट, इफ लॉ इज स्ट्रिंजेंट, then rupees 1 lakh. 7 number, 8 number over. We'll solve question number 9 now. Okay. 9 number, beta. Yes, read the question. Read the question. If law is stringent, beta, 1 lakh is a cost of filter, no? Cost of filter 1 lakh है ना? SS Limited, a chemical factory near Pune. It contaminated the locality for several years and has not been cleaned up so far, as it was not required by the statute. But on 31st March 2017,
Based on the evidences available, it is virtually certain that law is going to be enacted shortly after the year end, and based on that, entity has to clean up the locality which was already contaminant. Contaminant मतलब खराब किया हुआ, pollution किया हुआ. Is there any requirement of provision on 31st March 2017? केमिकल फैक्ट्री है जो क्लीन अप की नहीं है बाय स्टैच्यूट, जरूरत भी नहीं है, बट अभी लॉ आने वाला है तो लॉ आपको ये करवाने लगाएगा कंटेमिनेशन, तो प्रोविजन करोगे क्या? 9 नंबर, पास्ट इवेंट, यूजिंग अ लैंड, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर कंटेमिनेशन obligation becomes virtually, virtually मतलब ये वर्ड यूज करना है, वर्चुअल वर्ड यू हैव टू यूज, हा, वर्चुअल, virtually certain by statute, so legal obligation, not constructive, so legal obligation, outflow probable, measurement can reliably estimate, so provision should be made. I hope you understood. See, facts and conclusion you can write by your own. I am giving you only conclusion part. I am giving you only conclusion part. Past event, present obligation, outflow measurement. So provision should be made. Yes. Beta, restoration is possible only if there is a modification. Beta, Anmol. 6 नंबर के क्वेश्चन में रिस्टोरेशन इज पॉसिबल ओनली इफ मॉडिफिकेशन इज देयर. प्रबीर दत्ता, प्रबीर दत्ता का क्या क्वेश्चन था? प्रबीर का मुझे क्वेरी नहीं आया बेटा. प्रबीर, एक बार क्वेरी वापस भेज. वर्चुअली मतलब, वर्चुअली मतलब प्रोबेबल इन सिंपल लैंग्वेज. वर्चुअली मतलब दिख रहा है कि ये आपको देना पड़ेगा. मतलब जब आप लोगों को ये प्रोविजन नहीं होती है पर आपको दिख रहा है कि मुझे ये करना पड़ेगा भाई, सास ससुर आने के बाद मुझे उनको मिलना पड़ेगा. इट इज नॉट ऑब्लिगेशन पर वर्चुअली सर्टन दैट आई हैव टू मीट देम. ओके, इच्छा नहीं होगी तो भी मिलना पड़ेगा. सो इट इज कॉल्ड एज वर्चुअली सर्टन. ओके, आपको ना मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहते हुए वर्ड्स, वर्चुअली वर्ड, नाउ यू कैन रिकॉल इट. सास ससुर जी आने के बाद. हाँ, नहीं बेटा कुछ भी नहीं हुआ है. हाँ, थोड़ा सा लग रहा है मुझे भी आज ट्रीटमेंट के वजह से. प्रिंस, 10 नंबर, माधव तिवारी बोल रहे हैं 9 नंबर समझ में नहीं आया. ठीक है बेटा, हिंदी में एक मात्र बता देता हूँ. ये क्वेश्चन देखो बेटा, आप एक केमिकल फैक्ट्री पुणे के बाहर चला रहे हो और क्या हो रहा है कि ये केमिकल फैक्ट्री से जो पोल्यूशन होता है, जो भी प्रदूषण होता है, तो उसके वजह से आपकी यहाँ पे एक लैंड है जो आपने खराब कर दी बेटा. वहां पे जो भी केमिकल्स बाहर आ रहे हैं आपके,
डेंजरस केमिकल्स है। और स्टैचूट क्या बोलता है भाई, ये गवर्नमेंट की लैंड है, आप वो फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है, आप फायदा कर रहे हो, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्यों खराब कर रहे हो? तो उसको कंटेमिनेशन आपने करके रखा है, तो वो क्लीन अप करके दो। वो खराब करके रखा है, वो क्लीन अप करके दो। आप कोई घर में रहने को गए बेटा 1-2 दिन के लिए, और वो घर में से वो मालिक क्या बोल रहा है कि तुम्हें निकलना है तो वो घर साफ करके दो। सेम थिंग है। अभी इसके ऊपर लॉ तो है नहीं, पर लॉ आने के चांसेस है, वर्चुअली सर्टन मतलब लॉ आने के चांसेस है। अभी ये लॉ आने के चांसेस है, और आपने वो प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है, वो जगह खराब किया हुआ है, तो आपको क्लीन अप करके देना पड़ेगा। तो आपको रुकना नहीं है, जब तक खराब करके दे रहे हो तो प्रोविजन आज ही करके रखो। आया समझ में? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ओवर। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ यू आर एंजॉइंग ना बेटा ऑल दीज एग्जांपल्स। नाउ it's not very difficult na language, because when I studied this accounting standard 29 in my life first time, I was very scared. Why? Reason is better, that sentences really very difficult for me to grasp this, wordings of S29. And after breaking all these sentences, after keeping, making some parts of this definition, or dividing this definition in some sentences, beta, I found this standard very easy. And I already told that this standard needs a grip over the language, not only on the language, but you should understand the basic English, contamination and all these words. But when I was studying this standard, really, yes, I'm telling you the fact that contamination and all these words, beta, I took the reference of dictionary, because that words are not, used to me for that contamination, all these things. So when I studied this standard, मैं dictionary ही साथ में लेके बैठा था. Okay. So don't worry. ठीक है। इजी। इजी। थैंक यू अपर्णा। एक 10-12 क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर आपको छोड़ देता हूँ बेटा। 12 क्वेश्चंस तक ही लेता हूँ। 10 नंबर टारगेट से मेरे। सो 12 तक। ओके। 3 more क्वेश्चंस। चलो। 10 नंबर। A retail store has a policy of replacing the goods and repaying when the customer is dissatisfied. It is not given any warranty and not legal obligation, but this replacement policy is generally known. So tell me now, which obligation? Yes, now you only tell me. You only tell me. Which obligation, beta? Which obligation? अरे वाह मेरे शेर लोग, वेरी गुड। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। वाह 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 वाह। नाउ यू आर यूज टू दिस वर्ड्स। वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ओ सॉरी। व्हाट इज द पास्ट इवेंट? पास्ट इवेंट, सेल ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस, ड्यू टू constructive obligation, not legal. And why it is constructive obligation? To maintain business relations. Very good. To maintain business relations.
outflow 50% and more chances, probable, by way of refund or replacement. Conclusion, provision should be made. Provision should be made. Easy? Arey वाह रे वाह. Students, now you understood how to write the answer. See, facts and provision you can write by your own. Conclusion I am giving you. Okay? So question 10, conclusion. Second last question, beta. Second last question of the day. Sorry for leaving you early. Still, beta, from last 2 hours, I am in the same position in the standing one. So now, beta, yes, it's easy, 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 easy. Okay, chalo. Eleven number. Okay. And you promise me in next session, beta, you will read thoroughly this accounting standard and will answer all my questions. Okay. So from study material, you are going to read this standard. Oh? Thank you, Ruturaj. चलिए 11 नंबर पढ़ लीजिए बेटा. 11 नंबर. 11 नंबर. प्रिंस मेरा नहीं है इतना स्पीड बेटा. During 2016, 17, 15, customers of food manufacturers suffered from several food poisoning alleged from तो allegations क्या लगे from products that the entity sold. So allegations on that product. Management withdrew the product from the supermarket shelves as it's a precaution. During the year, legal action was brought against the entity. On 31st March 2017, the entity lawyer advised management that manufacturer was more likely than not to lose the court case. Management recognized a provision for damages on 31st March 2017. No need. No need. On 31st March 2018, the entity's lawyers advised management that chances of losing the court case were now negligible as a result of favorable decision made in the similar case. As lawyers now believe that there is no longer probable the entity will be found liable, question arises as how this change in the assessment of the legal action should be reflected in the financial statement. Discuss. Here the answer is management should reverse the provision and also disclose as a contingent liability. Now, what is contingent liability? We'll see it in the next session. Contingent liability. Just write down these two words, conclusion. Yes, beta. Reverse the provision. Reverse the provision
and disclose as contingent liability. Very simple question. एक बार हिंदी में बता देता हूं. देखो बेटा, मैनेजमेंट ने एक कस्टमर को पॉइजन होने के चांसेस है, 15 कस्टमर को पॉइजन हुआ, तो मैनेजमेंट ने एक प्रोडक्ट रखा था, फूड मैन्युफैक्चरर ने, वो प्रोडक्ट उन्होंने निकाल दिया, वो प्रोडक्ट उन्होंने निकाल दिया. समझ लिया? तो वो शेप पे से बेटा वो निकाल दिया प्रोडक्ट, और लीगल ऑब्लिगेशन वो 15 लोगों में से एक ने डाल दिया. कंपनी ने, डर लगा, कंपनी ने प्रोविजन कर दिया. लॉयर बोल रहा था भाई डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना. ओके, सो लॉयर तो बोल रहा था मैं आपके साथ हूं, पर कंपनी को डर लगा, उन्होंने प्रोविजन कर दिया. और 31 मार्च 2018 को ऐसा ही केस हुआ था किसी और कंपनी के साथ, और कंपनी केस जीत गई वो कंपनी. तो लॉयर ने बोल दिया भाई देखो हमारा भी प्रोडक्ट सेम ही है, तो काहे को डर रहे हो. सो डिसीजन अपने फेवर में ही आने वाला है. जैसे ही डिसीजन अपने फेवर में आएगा, प्रोविजन काहे को करके रखा, ठीक है करके रखा तो अभी रिवर्स कर दो और डिस्क्लोज एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? एकदम इजी है. यस सर, एकदम इजी है. हाँ मैगी. हाँ मनोहर यादव. इट इंक्लूड्स प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉर कंटिंजेंट एसेट्स. वेरी गुड बेटा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आज समझा ही नहीं बेटा 2 घंटे कहां चले गए. यस. In a lawful, in a lawsuit brought against the entity, a group of people are collectively seeking the compensation for damages to their health as a result of contamination to the nearby land believed to be caused by waste from that entity's production. Yes, beta, Priya, facts and wo you can write it by your own now. Okay. It is doubtful whether the company entity is the source of contamination because many entities operate in the same area, producing the similar waste, and the source of leak is unclear. There are many other companies who are also doing the contamination of the land. So here, it is not clear that our company is better doing these wrong things. Okay. However, the entity cannot be certain that it is not caused the leak, and true offender will become known only after the extensive testing. The entity's lawyer expects a court ruling in about 2 years. If entity loses the case, compensation is likely to be in the range of 1 crore to 30 crores. So, beta, how to write the answer? So here, answer is probable that entity will lose the case. We are not the correct person. Our expert will tell us. Provision. Entity will defend the case. Contingent liability. So you are not sure. So you will get the answer by expert. And if he thinks that you are going to lose the case, the provision. If you are not going to lose the case, but defend the case, for contingent liability. Over. Illustration 12. So beta, we are not sure about the answer. So diplomatic answer. So here diplomatic. Diplomatic मतलब क्या? No yes, no, no. जैसे हमारे घर में बेटा झगड़ा होने के बाद मैं डिप्लोमेटिक वे में रहता हूँ मॉम और बीवी के केस में, ना बीवी की साइड लेने की ना मॉम की साइड लेने की. तो बेटा डिप्लोमेटिक रहना इसको बोलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ डिप्लोमेटिक. यस. So thank you for these 12 questions. I hope you understood this accounting standard. So Rattamar points are there. I hope you will read it and you will answer it properly. So मैंने पूरा रट्टामार पॉइंट भी आपको बता दिया.
So quick revision. The standard talks about recognition of provision, contingent liability, and contingent assets. Not applicable to. Then provisions definition Rattamar, a liability of uncertain timing or amount. Liability means what? Present obligation arising from the past event, the settlement of which is expected to result in the outflow of the future economic benefit will from the entity. Is called the definition. Present means what? Existence on the balance sheet date. Probable means more than likely not, means 50% more. What is the obligation? Duty or responsibility. There are two types of obligation: legal by binding contract or statute, and by practice and to make the to keep the good relationship with the customer, constructive obligation. Past events क्या होते हैं? जैसे कि अभी आपको समझ में आया, सेल करना, बिजनेस करना, these are some past events. And probable that the future economic benefit will occur. Sorry, outsources will be occur. Then better you will make a provision. So this is all for recognition करना पड़ेगा. If all three conditions फैक्ट्स में लिखने पड़ेगा आपको, प्रोविजन में लिखना पड़ेगा. एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड. एंड इन दिस केस बेटा recognition करना पड़ेगा. In next session बेटा we are going to see contingent liability and contingent asset. Till that I am expecting you should read your study material thoroughly and come to the next class. Next class I think on 16. So we'll meet on 16 beta. Till that take care, bye bye, and we'll meet on 16 beta. Do proper study. Thank you.